So we are starting with Indian Evidence Act. इसमें शुरू के सेक्शन से शुरू होगा. तो Bill of Evidence Act was prepared by Sir James Stephens. Indian Evidence Act applies to both civil and criminal proceedings. As per the preamble of Indian Evidence Act, इसका आंसर है to consolidate, define and amend the laws of evidence. The law of evidence is procedural law. The law of evidence under the Indian Evidence Act is a procedural law. The object of Indian Evidence Act 1872, as set out in the preamble, is to consolidate, define, and amend the laws of evidence. And the Indian Evidence Act is not applicable to Jammu and Kashmir. नागालैंड में भी है और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में भी. Select the incorrect statement using the code below. तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग्स, ये गलत स्टेटमेंट है. इट डज अप्लाई टू आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग्स. The Evidence Act does not apply to proceeding before the commissioner appointed. So ये सही है. Does not apply to arbitrational proceedings or does not apply to commissioner appointed. गलत है यहाँ. Applies to affidavit presented in court. गलत है. ये सही है. Does not apply to. Applies to judicial proceeding held before the counts of military court. ये भी सही है. I mean गलत है. इन किसी भी चीज़ों पे अप्लाई नहीं करता. It does apply to commissioners. Applies to affidavit presented in court. नहीं. Applies to judicial proceeding. नहीं. इसका आंसर है 2, 3, 4 are incorrect. So the law of evidence consists of which one of the following? Ordinary rules of reasoning, legal rules of evidence. Which one of the following? तो legal rules of evidence, ordinary rules of reasoning नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन में दिया हुआ है. Which point out the wrong answer. हमें यहाँ wrong answer करना है. Does not apply to proceeding before an arbitrator. ये बिल्कुल सही है statement. Applies to all judicial proceeding. सही है. Does not apply to affidavit presented in the court of. बिल्कुल. Does not apply to affidavits. Applies to all judicial proceeding. Does not apply to arbitrator. Applies to court martial convened under Naval Discipline Act. ये गलत है. Does not apply to. The term code used under Indian Evidence Act includes कोड जो यूज हुआ है, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स,
person except arbitrators legally authorized to take evidence. ये है right answer. Which one of the following does not fall within the definition of the term court under the Indian Evidence Act? तो कोर्ट की डेफिनेशन में कौन नहीं फॉल करता? All judges, magistrates, person except arbitrators. तो जजेस हो गए, मैजिस्ट्रेट हो गया, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ये भी हो गया. बस यहाँ कंज्यूमर फोरम्स नहीं है, उनको कोर्ट के डेफिनेशन में नहीं गिना जाता. So which of the following dates are the enforcement of Indian Evidence Act is correct? तो 1 सितंबर 1872 उसी दिन एनफोर्स हुआ था. ES से याद रखना है हमें. Came into force, अब एनफोर्स है, came into force सेम बात हुई. 1 सितंबर 1872. Indian Evidence Act applies to affidavits. नहीं, does not apply to affidavits. Arbitration proceedings. नहीं. Departmental proceedings. नहीं. An inquiry to determine jural relation between persons. यहाँ पे आएगा केवल. Electronic records were included in Section 3 of Indian Evidence Act. तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला सेक्शन 3 में कब ऐड हुआ? वो था 17 अक्टूबर 2000. Indian Evidence Act does not apply to तो प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है. Does not apply to proceeding before an arbitrator. Affidavit submitted to the deponent of its own, यहाँ पे भी नहीं अप्लाई करेगा. अब तीसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मेड बाय चाइल्ड, ये गलत है. यहाँ पे स्टेटमेंट्स मेड बाय चाइल्ड यहाँ पे अप्लाई करेगा. और स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हुज पास्ट इज क्रिमिनल यहाँ पे भी करेगा. ये दोनों इसके सेक्शंस प्रेजेंट हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में. इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू affidavits present in court proceeding before an arbitrator. Point out the incorrect answer. Evidence में भी ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी भी सही है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री भी सही है, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव ये गलत है. लेक्स लोकाई का मतलब क्या है? लेक्स लोकाई का मतलब है लोकल लॉज, नॉट लॉ ऑफ लैंड. ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो दैट मीन्स इस स्पीड के अकॉर्डिंग 10 मिनट में वी हैव डन 20 क्वेश्चंस which is good enough. सही है, ऐसा चला तो बिल्कुल good.